little bit of contouring I'm doing. Now it's time to apply my favorite blusher. Filling up my brows with NYX palette. टू टेप इट लाइक यहाँ से लेकर आपका जहाँ पे आईब्रोज एंड हो रहा है वहाँ पे आपको करना है दिस, बिकॉज माई आईब्रोज आर एंडिंग हियर. Guys, this gonna be a smudged winged liner but with a different color. I'm going to use this MAC Kohl, so I'm just going to roughly drawing this line very roughly and very thin, not very thick. उसके बाद I'm just holding up this pencil brush. I'm roughly smudging it over. ओके एक बहुत शार्प थिक और स्मजी विंग्ड हमें क्रिएट करना है. फॉर दैट रीजन नाउ आई एम होल्डिंग अप दिस fluffy brush and I have this palette Newtrals 3 from Makeup Revolutions. I am going to pick up this burgundy matte color और मैं इसे smudge करूँगी. See my techniques guys, how I am doing it. इनर कॉर्नर्स पे मैं इतना नहीं जा रही हूँ बिकॉज वहाँ पे स्मज हो जाएगा. And this pink pigment from Huda Beauty. Yeah, this is looking fab now.
Welcome back guys again to my very own YouTube channel Being Beautiful, and this is Sabah. So you can see guys, again I have came up with another makeup video that is of the smoky eye again. This is not a kind of smoky eye guys, but this is a kind of smudgy liner look. मैंने एक smudgy liner look create किया है but using a different color guys, and this is looking absolute stunning guys. जैसा मैंने सोचा था वैसे ही दिख रहा है. I'm just gonna give a quick breakup about this look guys. Again, as you can see guys, मैंने एक matte smudgy liner create किया है using tape, और मैंने उसे burgundy matte burgundy color से smoke out किया. You can see that the smokiness to both of my eyes, and मैंने eyeshadow में कुछ भी apply नहीं किया है, just a single pink shadow from Huda. You can see that guys how beautiful this looks, and वही मैंने किया है. ना अपने upper waterline पे मैंने एक कोल अप्लाई किया है. There is no work to my lower lash line guys. उसी तरह से मैंने किया है, and this is a kind of cool tone makeup tutorial, so everything is in between pink and silver highlighter. I have used contouring, little bit of contouring guys, then the pink blush, and you can see the glossy lips is complementing this look very well guys. I hope you have liked the breakup guys. मैंने अपना कोल बहुत ही ज़्यादा heavy और thick रखा है, इसलिए मैंने shadow work कुछ भी नहीं किया है guys. If you do like this content, if you do like this efforts, if you do like this tutorial of mine and the entire thought behind this guys, then please like, share and subscribe to my very own channel Being Beautiful, and follow me on my Instagram account for a better makeup content. And guys, जो भी प्रोडक्ट्स की लिंक्स है मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड एज ऑफ नाउ आई शुड से अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ऑफ माइन. थैंक यू.